to live chat experience for you and your viewers. Choose who can participate, set a delay between message, hide or put people, health review, add moderate your channel. Hi friend, how are you? Uh, I'm today first time live. As you know, I'm like a learner. I'm learning English. So as like I'm new, so people are not joining here. Yes, hi. So learning English is not uh, neither difficult nor like easy. It's a depend on the up to you how much you are like passionate about this language, because passion is a very important. If you have a passion of like learning this language, not this language, anything. If you have a passion to learn anything, so you can learn easily, right? So, and interest and passion is a very important to learn any kind of the things as a language, because sometime what feel like it feel too bored. You will feel some like a bored after some time. So for motivate, definitely you should have a goal, and you have to be, you have to be patient for like learning this language, because it's not too much easy. It will take time, and it's long. This is a long time process. Like learning is a never ended process. You can learn language in your like rest of the life, right? Because what happened, language is increasing day by day, like many of the idiom phrases, and some of the things coming in like aiding day by day in this language. So we cannot learn all the things in a day. If I talk about say like me, when how I did like how I learned this language. So it's not a, like at first I want to tell you I'm still learning, right? I would say I'm beginner. I'm learning to zero. So I started my journey before 6 5 to 6 months. I started my journey 5 to 6 months. So that time, I did not know anything about this language. In the sense, I could not speak as a single word, single sentence to in this language. So what I did, I started to learn simple and small sentence, like basic sentence, right? And basic grammar, where I can where I can use present tense, past tense, and future tense.
because sometime what happen, we know how to speak but we don't know about like where we can put the right sentence and right grammar. And grammar is a very important, as like a basic grammar is a very important, because suppose if you want to talk about the future and you are using present tense, no, right? So how people can understand your you want to talk about the future? So that the things not like go in deep grammar, as like in deep, just you can learn some basic of the grammar, as like present tense, past tense and future tense, some basic. So basic rule help you, you know, how to make sentence, how to create like a, how to frame sentence. So when you got to know how to create sentence, how to make a good sentence, so you can speak. It's not a big deal to like speak English, but you have to, you know, you have to immerse in this language. You have to immerse in this language, as like you can read something, you can listen something, you can watch some English content, English movie. It will help a lot to understand how I can speak and how they are speaking, the way of they speaking. Because at first, don't you know, don't afraid to speaking. As I'm speaking, I made, you know, I'm making mistake. I know very well I'm making mistake, but I'm not going to think about it because I know it's our second language. It's not our first language, right? As like everyone has a native language, not English. So maybe it's not about the English. If you want to talk, if you would like to talk any, speak any other language, maybe Chinese and French is any language, so it's not easy task to speak within a day any day other language, different language. So it will take some time. And what we can do, we can, if you are I mean, if you are shy person, if you don't want to speak front of someone, so you can do one thing. You can do like you can talk to yourself. You can talk to yourself like as a simple sentence, as like, you know, small sentence. You can start with a small sentence to yourself, like if you are going market, right? So you can say like, I'm going market. I will आई विल कम आफ्टर वन, लाइक अ 1 hour. जैसे आपको कहना है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, सो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आई एम गोइंग टू मार्केट, कुछ खरीदने के लिए, फॉर बाई समथिंग, एंड मैं आऊँगा 1 घंटे बाद, मुझे 1 घंटे बाद जो है 1 घंटे समय लगेगा. आई विल कम आफ्टर 1 hour. That's the way of the speaking, you know. Definitely you will do some mistake, as I am doing some mistake. आप गलती करेंगे, बिल्कुल गलती करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोले ना, आप स्टार्ट ही ना करें. स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही तो लोग नहीं कर पाते हैं. दे थिंक लाइक दैट, आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश, हाउ कैन आई स्पीक इफ आई विल लाइक डू मिस्टेक, सो पीपल विल लाफ मी. सो ये बहुत नॉर्मली चीज़ है. आप कोई भी चीज़ सीखेंगे तो उसमें गलती करेंगे, और गलतियां होना जो है कि लाजमी है, क्योंकि आप उसमें मास्टर नहीं हैं, आप उसको सीख रहे हैं. तो सीखने में अगर गलती हो रही है तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है. सबसे बड़ी जो चीज़ है वो स्टार्ट करना. स्टार्ट नहीं कर पाते लोग, अपने आप को सिर्फ सोचते रहते हैं अपने मन में, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मेरे पास ग्रामर का भी आइडिया. ग्रामर, व्हाट इज द ग्रामर? बिकॉज यू नो ग्रामर is a deep ocean. We cannot get all the command in grammar, right? Because इतना ग्रामर हम समझने लगेंगे तो फिर कहाँ से समझ पाएंगे. लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट टू स्पीकिंग, बिकॉज अगर हम स्पीकिंग स्टार्ट कर देंगे ना, तो ऑल द थिंग्स लाइक वोकैबुलरी, ग्रामर and sentence structure, all the things will come in our mind automatically, right? If you will think like that, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं ग्रामर भी सीख लूँगा, मैं वोकैबुलरी भी 1000 के ऊपर जो है कि
लर्न कर लूँगा, बहुत सारा 2000 4000 सीख लूँगा, फ्रेमिंग सेंटेंस सीख लूँगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा इंग्लिश बोलना। सो मुझे नहीं लगता दैट इज़ नॉट लाइक अ गुड आइडिया, बिकॉज तब वो चीज़ें बहुत ही जो है हार्ड होती जाएंगी। हम सब कुछ साथ में कर सकते हैं। सब कुछ साथ में करने का मतलब ये है कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बोल सकते हैं। जस्ट 5 मिनट वी कैन टॉक। मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, एकदम शुरू से। वी कैन टॉक टू आवर सेल्फ जस्ट 5 मिनट। हम खुद से 5 मिनट बात तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल बिना कुछ बिना किसी हेडक और बिना किसी के बारे में सोचे, क्योंकि हम खुद से बात करना। वी कैन टॉक टू आवर सेल्फ जस्ट 5 मिनट इन अ डे। 5 मिनट, आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 मिनट बहुत होता है अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो। सो वन डे व्हाट विल हैपन, दैट विल ग्रेजुअली इंक्रीज। धीरे धीरे ये चीजें इंक्रीज होगी, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट। सो वन डे व्हाट हैपन, यू विल एबल टू स्पीक, यू विल एबल टू स्पीक। आप बोलने के बिल्कुल एकदम लायक हो जाएंगे धीरे धीरे। और उसके साथ व्हाट वी कैन डू, वी कैन watch, we can watch some content in English, because there are many content in English on YouTube। हम उसे वॉच कर सकते हैं। there are two things we need to understand: watch and listen. Listen is a different things and watching is a different things, I tell you। लिसनिंग का एक ये भी मतलब हो सकता है कि जैसे हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं। सुन रहे का मतलब ये है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हम अपना कुछ काम भी कर रहे हैं, उसके बाद हम सुन भी रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा फोकस नहीं हो पाता जो है सुनने में। वी यू नो वी वी आर बिजिंग इन अदर वर्क। सो जो भी हम सुनेंगे उसमें थोड़ा सा फोकस नहीं हो पाएगा। बट वॉचिंग इज द लाइक इम्पोर्टेंट। वॉचिंग इन द सेंस, ट्राई टू वॉच समथिंग इन इंग्लिश, लाइक try to some video and try to watch some cartoon and English movie in video in English। so what will happen, जब आप कोई कार्टून और मूवी देखेंगे इंग्लिश में, so what will happen, you will get to understand that context, in which context what he want to speak, right, what he want to say। अगर कोई बैठा है, अगर कोई आया, अगर मैं बैठा हूँ, अगर कोई आता है तो मैं बोलूँगा हैव अ सिट, राइट। सो इसका मतलब है मैंने उसको बैठने के लिए कहा, राइट। सो दैट द वे ऑफ द लर्निंग दिस लैंग्वेज is a it's a very, it will take some time. That is not a, like a cup of tea, but it's not a too much difficult. Just what we can do, we can we can indulge, we can immerse to ourselves in this language, so it will like become easy for us। And to be honest, motivation is a very important thing. It's like if you should have a goal, you should have a motive to learn this language. Without motive and without goal, what will happen is after some time you feel bored, like and consistency is a very important. So if you will have some goal and motive, so the goal and motive will be consistency। वो जो गोल आपने, लक्ष्य जो रखा है खुद के लिए, वो आपको जो है कि फोर्स करेगा जो है कि इसको करने के लिए। तो ये बहुत ही जो है कि जरूरी है। और वी आर नॉट इन लाइक अलोन इन दिस जर्नी। हम अकेले नहीं हैं इसमें। there are many people, they are trying to learn this language, they are trying to speak this language, and they are taking too much effort, right? They are speaking, they are like reading, they are listening, they are watching, they are doing too much the things। so definitely we can do, if they can do, so why we can not do, like because एक दिन सभी लोग जो है बिगिनर थे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। I'm talking about that person who has their native language, not their different native language, not English। so definitely one day they will they would a beginner। सभी लोग एक दिन बिगनर हो गए, and they started just think like that, yes I can do। so I can is a very must, I would say, like I can is the, this is not a word, this is a power,
मैं कर सकता हूँ ये कोई शब्द नहीं है, ये एक पावर है. इट मीन यू कैन डू एनी थिंग्स if you can think, and if so definitely you can do. At just try to start, try to start the do that things, because सोचने के लिए तो बहुत समय है हमारे पास जो है. वी कैन थिंक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ डे, बट व्हाट वी कैन डू इन अ डे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मैटर अ लॉट. हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, मुझे ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन हमने किया क्या, हम कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. इट्स डजेंट मैटर, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लैंग्वेज. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट स्टार्ट. टेक अ एक्शन, टेक एक्शन टू डू दैट थिंग्स, बिकॉज कुछ नहीं होगा सोचने से. आप पूरा दिन, पूरी रात, पूरा पूरी उम्र सोचते रह जाएंगे अगर आपने स्टार्ट नहीं किया. एक बार अगर आपने स्टार्ट कर, वंस यू स्टार्टेड योर जर्नी ना, सो आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ, आफ्टर सम ईयर, you feel like that, yes, really I can, like, I can do. So, and don't think too much about the people, what they are like thinking about you, and what they are, they will think. It doesn't matter. Anyone, you cannot, like, you cannot stop to them. आप किसी को रोक नहीं सकते सोचने के लिए. आपको आपको क्या करना है, आप खुद ही करिए और खुद ही सोचिए. आप किसी को जो है कि रोक नहीं सकते कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचो और बुरा मत सोचो, बिकॉज दैट इज इन देयर हैंड. it is not your hand, right? And what we can do, the we can do just all the things whatever in our hand. So people thought and thinking, it's not our hand, right? So they can think, and they can do, but try to think ourselves what we can do, and what will be good for me and my future and my career. So definitely that will be good for you. So thank you so much, guys. Definitely, uh, I enjoyed a lot, and I will meet again to my all audience, because it's my first time to live. And as you know, I'm learning this language. I'm here to learn, and so if I did some mistakes, so sorry for that, because I'm learning, right? But I'm just for saying you can also start your journey as like I started. And we don't think too much about the what will happen. Just try the thing in our hand, just we can try, and try and try and try. One day definitely what you want to achieve, you will achieve. So thank you so much for, like, joining. Yes, Jai Hind.